All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Shishi Gauranga. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों का एक बार वापस पुनः स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। भगवत गीता पर चर्चा चल रही है। वी हैव हम लोग का इंग्लिश कम हिंदी कभी ऐसा रहता है, तो इंग्लिश सबको समझता है, लाइक ठीक है। सो we are discussing on Bhagavad Gita. We have completed 2.4, 2.46 last time. Yeah. So this time we'll be taking up 2.47. So okay. तो सभी लोगों ने खोल लिया है 2.47. Prabhu, if you want in English, then you can just open on the internet. Just say B Veda base. No, you can just type BG 2.47 and you will get it. हिंदी आता है? Okay, प्रभु, हरि बोल। Page number 10, chapter 2, 47, श्लोक नंबर 47. हरे कृष्णा। सब लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 47। सभी को या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। Just repeat. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्व कर्मणि मा ते स्वंगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगो अस्त्वकर्मणि मा ते संगोस्त्वकर्मणि।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कोई ट्राई करेंगे आप माता जी? कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् कर्मणि मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हरे कृष्ण। और कोई ट्राई करेंगे कोई? कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मास्ते संगोत्स्म कर्मणि मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हरे कृष्णा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। कर्मणि कर्मणि कर्म करने में, कर्म करने में एवं एवं निश्चय ही, निश्चय अधिकार 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 ते ते तुम्हारा तुम्हारा माँ कभी नहीं कभी फलेषु फलेषु कर्म फलों में कर्म फलों में कदाचन कदाचन कदापि कदापि माँ हाँ कभी नहीं कभी नहीं कर्म फल कर्म फल कर्म का फल कर्म का फल हेतु हेतु कारण भू होवो हो माँ कभी नहीं कभी नहीं ते ते तुम्हारी तुम्हारी संग संग आसक्ति आसक्ति अस्तु अस्तु हो अकर्मणि कर्मणि कर्म न करने में। कर्म न करने अनुवाद तात्पर्य वे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे। तुम्हें तुम्हें अपने कर्म अपना कर्म कर्तव्य कर्तव्य करने का करने का अधिकार है, अधिकार है, किंतु किंतु कर्म के फलों के कर्म के फलों के तुम तुम अधिकारी नहीं हो। अधिकारी नहीं हो। तुम तुम न तो न तो कभी कभी अपने आप को अपने आप को अपने कर्मों के अपने कर्मों के फलों का फलों का कारण मानो, कारण मानो, न ही कर्म नहीं न करने में न कभी 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 आसक्त हो। सक्त हो। तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म में वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कार्य विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्ति हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार तत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म का अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निदेशात्मक, वह बंधन का कारण है।
अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरि ओम तत्सत ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगणा ललितान् श्रीविशाखान्विचांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा दिन है, एकादशी माधव तिथि, और कल ही दशहरा गया, तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छाई की बुराई पर विजय, इस नाम से कहा जाता है ना दशहरा को, है ना। तो अच्छाई, राम जी अच्छाई को रिप्रेजेंट करते थे, और बुराई रावण को रिप्रेजेंट करते थे, उसके वो जो 10 अवगुण थे उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो उन 10 अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो रावण के ऊपर राम जी ने तो विजय प्राप्त की थी। अब हमारे अंदर भी रावण है, हमारे अंदर भी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सभी भरे पड़े हैं। तो दशहरे के दिन एक्चुअली बस हमारी तरफ से यही प्रार्थना रहनी चाहिए कि हे राम जी, हमारे अंदर से ये शत्रुओं को बाहर निकाल के फेंको, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इस भावना के साथ में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और ये बहुत, लेकिन नवरात्रि नवरात्रि हमने मनाई थी। तो नवरात्रि क्या होती है? दुर्गा की 9 दिन की उपासना, जिसमें हर एक दिन, एवरी डे adds to kind of adds for your nourishment towards bhakti, like when you fast for 9 days, जब कोई 9 दिन के लिए नव दुर्गा की उपासना करता है, तो अपनी क्या बोलते अपने हृदय का क्लीनिंग करना शुरू करता है ना। क्योंकि जब फास्ट करता है, चित्त भगवान के मन में लगा रहता है, दुर्गा के मन में लगा रहता है, तो एक फास्टिंग का एक जो पुण्य मिलता है आपको, वो सारा कुछ जो विजडम, जो स्पिरिचुअल विजडम हम गैदर करते हैं, उसका एक डे बाय डे बढ़ते रहता है। और 9 डेज के बाद में जो विजडम, पूरा स्पिरिचुअल विजडम जो जमा होता है, 10th डे उसका वो कल्मिनेशन होता है। तो कल्मिनेशन, कल्मिनेशन बोलते क्या है? हाईएस्ट पीक जो बोलते हैं ना। तो किसी को चढ़ना है, कोई शिखर पर चढ़ना है, तो अनेकों पड़ाव का क्रॉस करते हुए आखिरी में शिखर तक पहुंचा जाता है। तो विजयदशमी उस शिखर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बिना मांगे मुहूर्त का वो समय रहता है ना। कभी, अब हम तो राजस्थानी, आप तो जानते हो कि 3 मुहूर्त शास्त्रों में ऐसे बताए गए हैं, जिसको 3 दिन ऐसे बताए गए जिस दिन आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो अक्षय तृतीया, उस दिन शादी भी हो जाती है हमारे तो बिना कोई मुहूर्त के, है कि नहीं? पहले अखा तीज बोलते हैं, उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। तो शादियां भी हो जाती थी बिना कोई मुहूर्त निकाले। बसंत पंचमी, बहुत ही शुभ दिवस। और ये दशहरा। इसीलिए आप देखोगे जितनी नई चीजें लेते हैं लोग, नया घर लेते हैं, हाउस वार्मिंग करते हैं, या फिर मिलना जुलना, इसीलिए ताकि बना रहता है, ताकि वो दिन बहुत ही शुभकर होता है। ऑफ कोर्स आगे चल के धनतेरस रहता है, लेकिन लोग मोस्टली धन का काम करने के लिए करते हैं। बट ये 3 चीजों के ऊपर ऐसा
ये बताया गया कि आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं रहती है, तो इतना पोर्टेंट त्योहार होता है और वो भक्ति के लिए हमारे कितना काम आ सकता है, इसीलिए कभी कभी इसको इस हिसाब से मनाना चाहिए। तो दशहरा हो चाहे एकादशी हो, कोई बात नहीं, एकादशी फिर माधव तिथि है। सो विल कम बैक टू आवर डिस्कशन। मैंने बोला दशहरा कल चला गया, वैसे मैंने कल ग्लोरीफाई किया था, आई विल अपलोड इट माय वीडियो, तो आप लोगों को सब देख लेना। अभी मैं अपलोड नहीं किया हूँ, कल रात में आया जब तक 11:30 हो गई थी मुझे। तो 2.47, 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु अकर्मणि। I'll read the translation in English once for you all. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty. So, quite interesting shloka and quite misquoted shloka by everybody many of the times. We'll understand. आप देखोगे हर जगह ये पहली लाइन स्पेशली कर्मण्येवाधिकारस्ते कई जगह ऐसा लिख के रखते हैं, है ना? That is, so we'll understand all that. So before that, we'll have to recap. What did we understand in the last class? Yes, Prabhu. Last class, 2.46, 4546. You can recap. And Different both. purposes of Vedas can be served by chanting the Krishna. Yes, correct. In the EAC chart. Different purposes of Vedas can be you can obtain that by simply chanting the or simply worshipping Krishna, right? Yeah. Or knowing the purpose of Veda. The entire, instead of reading all the Vedas, if you know the purpose of Vedas, that's enough. And that Krishna established by giving an metaphor. एक example देकर उन्होंने समझाया था, क्या था वो? Yeah. So the purpose which different wells serve is served by just one ocean of water or one river. Okay, you can take an example of river also. In olden days, we took an example like, every village had wells. It was very common to our Vedic civilization. Every village had so many wells. Each well was designated for a particular purpose. This well is for drinking water. This well is for washing clothes. This well is for only Deva Karya. So all those kinds of things were there. So if people would not have used that for different purposes. Okay. So, but that same concept does not apply for one big ocean of water, say lake of water or running water, say river. Why? Because at that one place, being the vastness in that majority and flowing nature, sometimes that same water can be used for drinking, that same water can be used for washing, or that same water can be used for various purposes. So whatever subjects which have been said in the Vedas, like you want putra, then there is putra kameshti yagya. You want some health issues to be rectified, there is some health related solutions in the Vedas. So all the purposes can just be served by Brahmanasya Vijatana. That is a person who knows about the Brahman or who knows the purpose of that Vedas. The purpose of the well is served by the river. One river. Many wells' purpose is served by just one river or one ocean of water. Similarly, all the Vedas, whatever solutions given in that is served by knowing the purpose of that Vedas and serving that. And that is how we understood quite a few things, right? Any other thing you remember within that? Any technical point? Application of Veda. Yes. Okay. And traditional. Yeah, three types. How do we understand the Vedas in three senses? One is restrictive sense, that is where it is said, you do this, you do Sola Somvar, you will get one good husband, some kind of things. So in restrictive sense, you don't have to do this on Tuesday, Wednesday, Thursday, or, Saturday. So these are restrictive sense of Vedas, which you get it in all the four Vedas. And then second is traditional. Traditional means what? Knowledge, any kind of knowledge that is of the Vedas, of the gods or the Devi Devtas or the Supreme Lord, any kind of knowledge. The knowledge could be related from the LKG or say today we call it as nursery till the post-graduation courses. So where you are, it depends on that. And then third is inclusive. So we gave you inclusive. I gave you the chart, Shruti and Smriti. All this where,
where when Vedas, Shruti includes only the Vedas as well as the Upanishads. Okay, and Smritis includes various Puranas, Itihasas, and all the other chart. So all this information, they will not be contradicting to each other, and that is why it is an inclusive sense called the entire inclusive Vedas. And that is how shared the PDF last time. So what is total Vedas? Yes. Apart from that, anybody else? Anybody else? Prabhu? You explain to the gradual development to exactly how Vedas from higher negative to low. Okay, the graph you're meaning. Yeah, yeah. Okay. See, you said this was also countering the fourth reason. Yes. Which is Yes. share. Yes, Kulakshaya. That is what it was for countering the fourth reason which Arjuna had given, that मेरे कुल का मेरे फैमिली के ट्रेडिशंस का क्या होगा जब सारे बुजुर्ग मर जाएंगे तो मेरे फैमिली का ट्रेडिशंस का क्या होगा. सो कृष्णा इज काउंटरिंग दैट एंड गिविंग द सॉल्यूशन टू अर्जुना दैट the purpose of Veda, to know the Vedas is to know me, and you have accepted me as a guru. So, this Guru Shishya Parampara is the only tradition which will be the realistic tradition which will go forward. All other traditions, easily, that is what, last time I forgot to say you, Guru Shishya Parampara is not only for this Janma, it is for even other Janma. Once you have got a Guru, and if you have not cleared your life, if you have not perfected your life in this Janma, then it is your duty of the Guru that he has to come back again and take you back. It is that kind of life. So once you have taken a Guru, it is not for this life, it is all for the coming lives also. If at all you wish to aspire other lives, then it is for that life also. Whereas your mother, your father, your brother, your sister, whatever traditions you follow, they will end up with this lifetime. Not necessary that next Janma you will get the same mother father. We took examples of Shastras before when when a person came back to birth, he said oh, I had taken so many births, kind of examples. Okay. In that context, my wife, you have the Sato Janam, right? Yeah. She said this is the seventh one. So but Sato Janam we already discussed. Sato Janam was discussed during that before this only. That it is when you say Janam Janmantar ka saath, we don't know what will happen to the next Janma also. Everything depends on your consciousness when you leave the body. So Sato Janam to yeah, Saat Janma can happen if you're Krishna and your family is also Krishna devoted, then certainly you will get something which is in the Krishna's family. There you can get certainly Sato Janma, but other thing I cannot guarantee. Krishna also doesn't guarantee. So you talked about the Bhagavad Gita is rejecting the Vedas. yeah, that's It was important. bit of a Yes. discussion. Yes. He said, okay, not rejecting, it's a transcending. Yeah, it is transcending. X-axis, Y-axis. X-axis, Y-axis. That's what when Mataji said, I was about to tell that only. The journey. Yeah, yeah. So that is what when many of the times many of the people think that maybe this when Krishna said don't read Vedas, that means what he is rejecting Vedas. Don't follow Vedas, he said. So he then said, don't read, but then, he said, get above the Vedas. So that is whether he was rejecting Vedas. So we discussed, no, it is not rejecting the Vedas. Rather, it is looking at an higher point of view that, you have to transcend them. It is as good as, you know the purpose of that Vedas, and that's more than enough. Like, you know the purpose of that Vedas, and that's more than enough. That's why he was saying that, and if you are that, you don't have to worry, and you will get that based on your past karma, where we took the example of 6th chapter also. If you have to become a yogi, bhakti yogi, or karma yogi, or whatever yogi you want to become, tasmat yogi bhavarjuna. Arjuna has been asked to become a yogi. So whatever yogi you become, so because of your past karma, you will get that situation where you will know the purpose of the God, and then you will not necessarily go into the ritualistic activities which has been specified in the Vedas. Hare Krishna. And that is how I gave that transcending axis and y-axis and x-axis example, that we are doing this animalistic life, we come into Bhakti Bhav, and then, we are in that negative of the y-axis. And by following the Vedas, we come up to slowly towards the positive, that is, till the 0 point. So Vedas help us to bring nearer to that Y central line. And when you come to Upanishads, it will exactly bring you to that central line. That is, it will make you to the 0 level. And then if you have attachment to Bhakti, then automatically your Bhakti chart will grow accordingly.
So that's why I gave you the differentiation for y-axis. I didn't take x, but on the x-axis, if you plot from extreme negative, you come to the 0 and you may increase to the positive level. So we come to today's shloka, right? So we all know where we are in this, right? In this chart, which this entire discussion is being going on, that how to become Bahushaka Buddhi to a Vyavasayatmika Buddhi. So from Bahushaka to Vyavasayatmika, Bahushaka Buddhi is a big hindrance in the bhakti life, and that is how Krishna advises that you have to become single point focused. You know, Arjuna was single point focused. That is how he became a best Dhanurdhar, right? So, and we discussed, like, you know, how Vedas and all those misguide us, like, not misguide us, like, you know, give us the way where we may end up going up to Swarga, enjoying the heaven, and then again coming back. Okay. Then how to get out of this circle, and that is how Krishna says in the last two shlokas, that is, you know, Nistrai Gunyo Bhavarjuna. Get above the modes of the nature, you know, all these three modes. Get above these three modes and come to the spiritual level. Okay. And when you come to that spiritual level, don't worry what has been written in the Vedas. You are already at that transcended level. And that is what he gave the metaphor example, giving the purpose which is being served by various wells can be just served by one ocean of water. Now, with that same concept, we are proceeding. So, you know, how the solution, Nistrai Gunyo, and how we can become Nistrai Gunyo, that is where is today's shloka, which comes, recognize your duty. So we are in this aspect, and then slowly we go until 53, we'll end up this. Okay. So this has been already there in the group, but you are all not there in the group. We'll add you slowly, don't worry. Slow. 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्वर माते संगोस्व कर्मणि. So in this text, Krishna is placing before Arjuna the method of doing karma. Karma is any kind of work, you know, any kind of work without getting entangled, right? This entire Buddhi Yoga started why? Because Arjuna was still having a slightest of the doubt that, you know, even if I kill my men, even Krishna is telling that, you know, you have to do yuddha, you are a Kshatriya, you have to fight, but fighting would involve killing, and if I kill my king's men, my own men, there will be some amount of sin. And that is how Krishna comes and says, we go to Buddhi Yoga. That is either you use your intelligence, and in that case, you will be relieved of your sins. And in that scenario, we are going through all this. So, without getting entangled. So we already came across this one word. We'll again recall that word, you know, like just do the karma for the sake of doing. We just once spoke, you know. So I'll just anyway come back to that sloka again. So this is the way of doing nishkam karma. This is what is the shloka which exactly says, which is we call it as nishkam karma. कि आपकी कोई बिना कामना के ये कर्म करना. कर्म रिक्वायर्स ऑल एक्शंस, यू नो. एक्शन वी कॉल इट एज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, है ना. हिंदी में उनको कहा गया, क्या कहा गया है? स्वधर्म. कर्म करना स्वधर्म है ना. और स्वधर्म और परधर्म हमने बहुत पहले समझ चुके हैं. नया है उनके लिए स्वधर्म, अर्थात हम जो शारीरिक लेवल पर कर्म करते हैं वो हमारा स्वधर्म हुआ. एक तो शारीरिक लेवल पर, और एक हमारा स्पिरिचुअल लेवल पर स्वधर्म होता है कि हम भगवान के अंश है, हम भगवान के दास है, उन तक हमें वापस पहुंचना है. तो वो होता है हमारा परमानेंट स्वधर्म. तो वन इज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. ओके. एंड श्रीला प्रभुपाद डिस्क्राइब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हाउ मेनी टाइप्स? 3 types in the purport, right? What did he say? One which is routine, okay, which you do routinely, which you have to do, right? Daily getting up, you have to take your, you have to brush your teeth, you have to take bath, you have to do, you know, have your prasadam, have, you know, go to office. So this is a routine job, right? Once you are into Mataji is getting up, cooking for the family, there, that it's a routine job. One which is emergency works, which comes only for specific purposes. You know, somebody had fallen, we had to go to the hospital, or, you know, we had to rush to the hospital, I've fallen sick, or, you know, this week some special festival is coming, so I have to go some extra mile, and, you know, maybe I have to do more extra preparations. है ना. छप्पन भोग हमारे यहाँ तो होते ही रहते हैं ना. तो अभी वापस इस महीने में भी छप्पन भोग आएगा, आने वाले महीने में गोवर्धन में आएगा छप्पन भोग. तो we have you know, emergency works, and then we have desired activities. We have desired activities. मुझे एक गोल है, ये पूरी करनी है ना. So there are 3 types of works. So prescribed duties
are of the three types. So within the three types, the prescribed duties, the one which is authorized by the Shastras, okay, which we call it as karma, यहाँ पे यही बताया गया, और which are authorized by the Shastras are without any desires. Okay. Prescribed by the duty, authorized by the Shastras, and when performed without desires, okay, they lead you from not getting the karma phala. That is, you get free from those bondage. कर्म फल के बंधन से आप मुक्त होते हो यदि आप शास्त्रीय प्रामाणिक कार्य करते हो. Okay, and however, if you perform as per your own desires, which is not recommended as per Shastra, which we call it as vikarma, then you get bandhana. You get karma bandhana. That is, okay. So karma bandhana we have understood, right? Karma bandhana means for whatever action we do, there is a reaction. Either we get punya phala or papa phala, and after this body goes, that after death we have to enjoy those punya phala or papa phala and again come back. No, this is what is the chakra. So karmanye vadhikaraste, the first word, karmanye vadhikaraste. As I said, this is a very misquoted part, 1/4 part of the shloka, which is always many of the time misquoted. Means adhikar is what? Right, right? Adhikar means what? Right. So you go to sometimes, it's very commonly written in India, you'll karmanye vadhikaraste, itna sa line लिख के छोड़ा हुआ रहता है. गीता का उपदेश, गीता का उपदेश, और उसका मीनिंग क्या है? भाई आपको काम करना है, कृष्ण ने बोला है काम करना है, दिन सुबह शाम काम करना है. आगे का लाइन नहीं बोलते आगे का लाइन बोलते हैं तो फिर पता चल जाता है ना. तो मीन्स बोलते हैं, लेकिन अगर उसका मीनिंग भी नहीं समझाना चाहते हैं कि लाइक क्या है. सो व्हाट इज दिस, ओके, वो बाकी का लाइन माफलेशु कदाचन, वो वाला लाइन छोड़ देता है. क्यों? कि वो उसके विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स, वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट्स. सो व्हेन यू से विदाउट एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट्स, इसका मतलब है काम करते रहो, तुमको एंड में तनख्वाह नहीं दी जाएगी हाँ, कोई वैसे मीनिंग से ले ले कि आपको महीना भर आपने काम किया है और आपको एंड में तनख्वाह नहीं जाएगी, दी जाएगी, तो क्या होगा? आप बोल मीन्स लाइक देन कृष्णा ने आपको हर प्रकार के काम करने को कहा है क्या? इन वेदास डिड ही से टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स, एंड somebody says okay, my work is to steal, I do thefts, with that I run my home. So whether that kind of work is allowed? No, it comes under vikarma, right? So it is not allowed. It is against the shastras. So those deeds, so you cannot say stealing is my right. You cannot say stealing is my right, right? So what is that right? We have to understand. So in this world, everybody speaks of these two words, right? Rights and responsibilities. How many of you, right? Rights and responsibilities. Be it in anything, you study political science or normal, any subject or office or, any kind of field, political field or any field. People speak of these two words, rights and responsibility. So what is the right? Like example, I'll give you. Everyone has a right to practice his own religion, right? Is it your right or not? Everyone has a right to practice your own religion, right? Your In most countries. in most of the countries, yes. Everywhere. India is that only. Vedas say. So, but at the same time, it is your responsibility as a citizen that you have to obey the laws of that country, pay bills from time to time of that country. If you have done something wrong, pay fines from time to time in that country, right? So that's your responsibility. So now karma means any kind of work or deed. You have a right. So you have a right to do your work. So how many of you going to office, do you think your work is a right or responsibility? How many of you going to office think that going to office is my right or it's my responsibility? It's a both.
Is it both? To go to the responsibility, we need to have some rights. Without we cannot. No, means right what? Like Now going to office is your daily routine, right? yes. So that's your right, or it's your But I need some permission to I need some सोच permission लो. I need some permission to enter in the office, then I will perform it. Okay. To fulfill the responsibility, we have some rights. Without rights, we cannot perform any responsibility. So this is where exactly people sometimes misguide themselves. What this shloka says, they will exactly relate it to such kind of thing. I just wanted to bring out that. Don't worry about it. Everybody of the opinion is yes, and work is my responsibility. Right? More it is responsibility. Of course, if I have been given the appointment at that company, it is my responsibility. Like that kind of people think, and it is my responsibility. I have to work because I have to feed my family. I have to put some, food on the table, bread on the table in English when we call for my family. So it is my responsibility towards my family that I have to work. It is your right to work. You don't call it there. You'll call it as it's my responsibility that I have to work. Okay, karmanye vadikaraste. When Krishna is saying karmanye vadikaraste means he is saying you have a right to your prescribed work or duty. You have a right to your prescribed duty. So normally, if all the people think it is their right, then what they think is right to the fruit of that action. मैं गोइंग टू द ऑफिस 1 महीना जाके मैं काम कर रहा हूं, उसके लिए मेरा राइट है कि मुझे तनख्वाह क्या मिले आखिरी में. मेरे राइट है कि मुझे तनख्वाह मिले. सो पीपल टेक द फ्रूट ऑफ एक्शन एज राइट इवन दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, but Krishna here exactly saying the opposite. He is saying you have a right to work. He did not say you are responsible to work. You have a right to work. Okay. Then you will say, okay, I have means like if I have a right to work, and next line immediately Krishna says, Ma phaleshu kadachana. But you do not expect the result. You will say, what the hell? Going entire for the month and working for the office in the end, you say you should not get the salary. Then why should I work? One simple thing. सभी लोग यही सोचेंगे ना, भाई मुझे अब तनख्वाह ही नहीं लेनी है तो मैं काम क्यों करूं? है कि नहीं टेक्निकल पार्ट. तो लास्ट लाइन में कृष्णा वो भी क्लियर कर देते हैं. क्या बोल देते हैं? माते संगोस्व कर्मणि. यू कैन नॉट बी अटैच टू ऑफ नॉट वर्किंग. ये मत सोचो तुम्हें काम नहीं करना है, काम तो तुम्हें करना ही है. यू कैन नॉट बी अटैच टू नॉट वर्किंग. सो यू कैन नॉट रूल आउट दैट ऑल्सो. So, so Krishna is exactly inverting all the things. Huh. Saying that intention, right? Yeah. That must decide. Yeah. Then work towards a goal. Yes. Okay. And we have read that also before. So how do you reconcile that? I'm working towards a goal. Maybe the salary is the goal. Yeah. So I'm doing the work. Yes. You are saying that it's okay to do that type of duty. Hmm. So how do you reconcile? Yeah, we'll reconcile it. In the end, we'll reconcile. Don't worry. We'll reconcile all. Because all the 4 lines we have to understand. We're giving all this logic. Because, people sometimes very misleadingly take it as, it's our right. And, फिर फल की इच्छा नहीं करना है. Then take it exactly in that way. It's not possible. We'll have to have that right also in the salary. Otherwise, we'll not be fulfilling the other responsibility. So in that case, how do we have to deal with? So, these are all things. So, when you are thinking, it is when we think that we have a right to the when we consider that we have a right to the result, we consider the work as responsibility. And Krishna is exactly reversing here, and he says, then you think I am not working, I will not work. Then if that is the case, then he says mato means sangosva karmani, that you cannot be attached to doing of not working also. And there's one more line in between, ma karma phala hetur bhur. Krishna says, what is it? Do not think that you are the cause of the work. Do not think yourself as the cause of the work or the result of that work.
Do not think you are the cause of that work or the result of that work. इसका एक तो इसका यह मतलब हुआ कि तुम अगर नहीं करोगे तो ऐसा मत समझो कि तुम ही करने तुम ही वाले हो। करने वाले हो। तुम नहीं करोगे तो भी होगा। कम होगा। ऐसा तुम अकेले ही नहीं करने वाले हो, एक्चुअल मीनिंग आएगा उसका, तुम अकेले ही नहीं हो करने वाले। बहुत बहुत सारे तुम अकेले नहीं हो करने वाले, दैट विल बी द राइट वर्क। Yeah, everything will come out. Yeah, that's what exactly. So you are not the alone. Like, so we'll take examples and understand. So all these four lines seems to, each of this verse is like, it will give you a counter logical claim. Counter logical claim. So sometimes you may think, what's going on in this verse? If you exactly now can understand. So now, till now, what you used to understand? कर्मण्येवाधिकारः, मुझे काम करना है बस, हल्की चिंता नहीं करना, ठीक है, इसका मतलब ओके, सैलरी आ गई तो ठीक नहीं, लेकिन सैलरी तो चाहिए। So it's a very so it's like a real slok for us, but it has to be understood at what level, and that is how Krishna was preparing you till now. तो यहाँ पे सैलरी गोल है या फल? ना ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी फल है, काम करोगे तो फल है, आपने पेड़ लगाया तो आपको फल मिलेंगे ना। तो हमको गोल नहीं समझना है। गोल भी समझना है, हम समझाएंगे, डोंट वरी, बुद्धि काम आना है इसमें, तो इसलिए बुद्धि योग चल रहा है पूरा। सारे रिकंसाइल होंगे। द क्वेश्चन कम्स आउट, ये तो 3 टाइप के मैंने वर्ग बताए थे आपको, जो श्रीला प्रभुपाद ने लिखा था, इसलिए उसको समझाने के लिए। So essentially Krishna is talking about karma yoga here. And karma yoga means what? Yoga with Krishna. You have to keep Krishna in the center and do your karma. So till now, essentially was preparing, so whatever he was talking, he was, underscoring whatever till now, he is preparing you that Nistray Gunyo Bhavarjuna, get up to the modes of above these 3 levels and come to the level of spiritual. That is, Nirguna, we call it as. Come to that level. So once you come to that level, you will be able to understand this shloka properly. And that is what is Nishkam Karma. That is what is Nishkam. That is, at that level you will be able to. So work for higher consciousness. Work for higher consciousness, which means work with an understanding that we are not the body, we are the soul. Work with an understanding that we are not the body, we are the soul. And for that's why he is preparing you to become Nistraigunyo Bhavarjuna. कि आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन. Come to the spiritual level. At that level, you will realize what is this exact meaning. At material level, when we are put in a particular body, हमने जन्म लिया है इस material level पे, material world में हमने जन्म लिया है. When you are put in a particular material body situation, the body more or less determines to the larger extent what kind of work or inclination towards some work, or decides our disposition towards some work. So we talk about human bodily nature. Okay. So when we get this human body, basically in human body, going forward, Krishna will define that there are 4 types of human beings. We already took this before also. 4 types of human beings. So what is that? One is intellectual class, which is Brahmanas. Okay, we don't have to define because Krishna has not defined here till now. He'll define in the next chapters. So one is intellectual class. Second is administrative class. That is Kshatriyas. Third is business class, mercantile class, which is Vaishyas. And the fourth is working class, which is Shudras. So Karmanyevadhikaraste means according to type of your body, because you have been put in this bodily situation. You have got the human body now. You may have got a cat body, dog body, anything also. Karmanyevadhikaraste, when you are in a body, you will be inclined, or human body, you will be inclined to do a particular type of work. And Krishna says you have a right to do that work. You have a right to do that work. So in the name of understanding that you are the soul, it is not that you have to suppress or reject your bodily nature. Okay. You have to suppress or reject your bodily nature. You have a right to act according to your bodily nature, but if you are simply acting according to your bodily nature, that is what we all, do, act on the bodily nature.
then we will never be able to rise ourselves to the spiritual consciousness. Because we are always wanting to stay enslaved in the body. Actually, then there will be no difference. Like for example, cats, cats and lions, they are always wanting to eat their prey. Deer, cow, they are always wanting to eat grass. They have no other choice. Their bodily nature, when they are put into that particular bodily nature, they have been left with no other choice. A deer will eat grass, or a cow will eat grass, and a lion will eat prey. That is, कोई भी मांस खाएगा. There is no other उसके लिए कोई choice नहीं छोड़ा है. And if we also try to do the same thing and act according to that bodily nature, so then there is no difference between human beings and animals. That's what we say, right? So what we have been given one more additional thing. And what is that additional one more thing? Though our body is completely programmed or inclined to do a particular way of work, we have an option. We have been given one option because of our Buddhi Vivek. We have been given one option that we can change our motivation level. We can change our motivation level. Okay. That's why you will see children will be happy with just showing a chocolate. If the same chocolate is shown to you, you may not be happy. The motivation level is always different. So now think about the goals. So now think about your goals. So that it depends on your motivational level. So everyone has to have the work, but it exactly depends on your motivational level. So the motivation is what is being talked about in this Ma Karma Phala Heturbur. Hetur. Ma Karma Phala Heturbur. So motivation is what is being talked about. So do not work for the result. Let the result, or we can call it as let the result not be the motive of your work. Let the result not be the motivation of your work. कभी कभी इसलिए बोलते हैं ना भाई, मैं तो इतना काम करता हूँ, मेरे को तो इतना ही मिलता है. Don't get demotivated by comparing yourself that the other is getting 50,000 riyal and I am getting 5,000 riyal. Do not let the result be the motive of your work. You are here with me? Sometimes it is very technical, sometimes, so I'm making it a bit technical also so that नहीं आपको नहीं आपका पर्पस क्या है? अभी पर्पस की बात की थी हमने पिछली बार में. बिल्कुल शुरू से समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है. नहीं चल क्या रहा नहीं आपको. बॉडीली और स्पिरिचुअल लेवल नहीं समझ में आ रहा है. नहीं ठीक है, आप समझेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं. बॉडीली और स्पिरिचुअल लेवल पे समझ में नहीं आ रहा है. बॉडीली लेवल पे हम जो कार्य करते हैं वही कार्य हम करते रहेंगे, तो फिर हम स्पिरिचुअल लेवल पे उठेंगे कब? मिक्स हो गई, बिल्कुल भी नहीं क्लियर. 4-5 चीजें डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग. ओके, हम समझेंगे. आपका डायरेक्शन आप मेरे को पूछना अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है? तो हम स्पिरिचुअल और मटेरियल लेवल दोनों के लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं. बिकॉज आपको निष्काम कर्म कब होगा? व्हेन यू आर कमिंग अप टू द स्पिरिचुअल लेवल ओनली. एट बॉडी लेवल यू विल नेवर बी एबल टू डू इट ऑन निष्काम बेसिस, एंड दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग. एंड ह्यूमन बॉडी इट इज पॉसिबल. भेड़ बकरी कभी निष्काम कर्म नहीं कर सकती. वो पेट भरना है, वो कामना से ही कर्म करेगी. Right now, we are at the stage of prescribed. Yeah. To perform the prescribed duty like daily work or routine, we need to have some motivation. That is what. Without like that motivation So, really matters our like. Yeah. So that motivation level, do not allow that motivation level to determine the result. But like in prescribed, I assume like in prescribed work, like our work. Like routine work is already prescribed. Like I have to work and I have. I'll take example of Dhanurdhar का ही लेंगे, okay? अपने अर्जुन का ही लेंगे, because it is being said to Arjun, and then we'll draw it the same thing to us. What I will do, what I will get. Okay, now we'll take, because we are all general, we are all here working in working class, so we are all Shudras here working for the mercantile class of this thing. We'll take the example of Kshatriya, which is the Arjuna here, right? So in case of Arjuna, what is he? He is a Dhanurdhar, archer, right?
He is an archer. And when he is fighting the war, obviously he will fight to win the war, right? That is his motive. It means as a Kshatriya, what does he want to do? He will either he has to win or lose, right? There is no other option. He has to win or lose, or he was thinking of run away, right? That was also which was wrong. So he became a Dhanurdhar by practicing it, or say by making lot of efforts. He just not that become just Dhanurdhar by simply. He had to practice a lot, and he had to have he had to champion it by taking all pains. So why will he not want the result? He will certainly want a result, right? Arjuna also will want the result. But so what does so the answer? So he wants that right? Because when he is fighting, whenever he's going for a war, he is fighting. So he has that to win the war, or he will lose the war. So he wants that. So the answer would be that here what did he do? He was not fighting. He was running away, and he got confused, and that is how he surrendered to Krishna and said, "Whatever is best for me, please guide me." And that is what when Krishna is saying that the aim for the higher realization, he is taking him that become Nisray Gunyo, come to the higher level, come to that higher level and get the realization at the higher level. So working with detachment by working in the spirit of sacrifice, or in the spirit of service, or in the spirit of contribution to the whole. एक छोटा सा doubt। Hmm. जैसे आपने एग्जांपल दिया वार वाला, इसमें प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में हमें पता है हम ये करेंगे, वॉर डिफरेंटली मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो उस तरह से मुझे, लेकिन प्रिस्क्राइब वर्क पे मुझे रिजल्ट के आउटकम भी पता है, मैं काम करूंगा मंथ में मुझे इतना रिजल्ट आएगा, आई नो बिकॉज ऑलरेडी दैट इज तो अगर जब रूटीन वर्क में बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, रिजल्ट पास होगा नहीं होगा हम बता सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन रूटीन वर्क में तो हम बता सकते हैं ना, लाइक That is what he's telling. Don't make that as your motivation to get the result. You do your work as a contribution to the whole system, जो है पूरा whole system का, उसके अंदर आपका contribution जरूरी है। आपको उस contribution में contribute करना है। रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, यही बोल रहे हैं कृष्णा बाद में आगे चल के। रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको के बाद में दूसरे जज करेंगे। You're expecting salary, but not I- the government might change the rule. but my question is something different. Like- I'm not asking about that salary. This is the example. Like पास होना फेल होना, like I know मैं मेहनत करूंगा दोबारा, एक क्लियर डायरेक्शन है, बट इन रूटीन वर्क लाइक अगर आपका मैं जीत जाना चाहता हूं, आपका मैं नंबर ही किसी चेंज के हो गया, अगर- आपका नंबर ही चेंज हो गया, गलत स्टिकर लग गया एग्जामिनर से, होता है कभी कभी। हाँ, लेकिन disease can be started. हाँ तो यही है प्रोबेबिलिटीज में, यू आर नॉट द ओनली पर्सन बट अल्टीमेटली यू आर अफेक्टेड। है ना? प्रोबेबिलिटी बात करिए, आप पास हम- और फेल होने का रिजल्ट आपको पता है, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता है, हाँ। रिजल्ट पता है। तो यही या मोटिवेशन पास, लेवल भी वही है। या तो फेल, रिजल्ट पता है, हाँ प्रोबेबिलिटी नहीं पता हाँ, आपको। तो प्रोबेबिलिटी तो आप मतलब बोलना तो डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, हम लोग शायद गलत डायरेक्शन नहीं नहीं नहीं, मोटिवेशन लेवल इज द सेम थिंग। यू आर नॉट मोटिवेटेड टू फेल। मोटिवेट तो फेल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है डायरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं पता, रिजल्ट तो पता है हम लोग को, मैं कह रहा हूं, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पता कि आप पास हो गया फेल हो गए, रिजल्ट तो पता है, रिजल्ट सबको पता है, पर आपको ये नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी पास होने की और कितना प्रोबेबिलिटी है फेल होने की। हाँ फिर पेपर अच्छा करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी पता है कि पास होने की है, ओके, और पास नहीं हुए तो जैसे मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी पता है कि आप पास ही होने का है, फिर आप पास नहीं हुए तो यही तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई ना आपकी। अब जैसे हम so कॉम्बिनेशन so that's what he's saying, don't make probabilities at all, no, you do your work as a whole system। आपको एग्जाम लिखना, आप पढ़ के लिखो, उसका भी एग्जाम्पल मैं आऊंगा, अभी समझाऊंगा। मैं प्रभु जी एक राइट एक हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। मेरा राइट है मैं काम पे जा रहा हूँ, Yes। ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दी गई है काम है वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, Yes। ठीक है ना। अब जब सारी चीज होती है, एक होता है रिजल्ट, जब Yes। रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता है तो उस टाइम में हमारे क्या राइट्स हैं हाँ। प्रिस्क्राइब ड्यूटी में, ठीक ये है, समझना ये सो आ जाएगा चिंता मत, ठीक है चिंता मत करो। एक इसमें थोड़ा बोलना चाहता हूँ। अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण को 18 अध्याय तक जाना पड़ा, आप एक ही अध्याय में समझ जाओगे। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, बहुत अच्छा आंसर है, सही है। इसलिए हम लोग एक एक श्लोक जब समझते हैं ना, तो इसलिए टोटल में समझना होता है कभी कभी, इसलिए मैं आगे पीछे ले आता हूँ आप लोगों को। तो अर्जुना मैं कह रहा था कि इसमें जस्ट विल कंटिन्यू द एम शुड बी द
that you have to work in the spirit of sacrifice or work in the spirit of contribution, you call it as whatever, I'm telling, when I say sacrifice, bhi kaam mein sacrifice ki zarurat nahi, kaam mein you can go, office ke kaam mein you can take it as contribution, or work in the spirit of detachment, mujhe koi isse आशा नहीं है बट मुझे ये कार्य करना है तो मैं कर रहा हूं. So ultimately in the evolved consciousness it will come out to be that I'll have to work for Krishna, whatever Krishna's this thing is, and that is where it will come out to bhakti. So I wanted to take you there. So in 2.7, what did he say? As I was discussing, karpanya doshupata subhava pruchhami tvam dharma sammuda cheta yachre yashan nishchitam ruhi tanme shishyasteham shadi mam tvam prapannam. So when Arjuna has said this, he is already surrendered soul to Krishna. उनको अपना गुरु मान चुके हैं. तो कृष्णा भी अब बता रहे हैं, surrendered person has the right only to obey his master. He doesn't have to put his brains. Right? Okay. He has brains, he can apply that brain, but he has to oblige to the orders of his master. Right? गुरु ने आदेश दे दिया है, उनको फॉलो करना है. तो गुरु ने ऑलरेडी 2.18 में क्या कहा था? 2.18 में क्या कहा था? Get up and fight. That's what you. What was that he said? युद्धाय युज्यस्व. हाँ हाँ, युद्धाय युज्यस्व है ना, वही है ना. हाँ, श्लोक वही बोल रहा हूँ. या फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग. Forget everything. Fight for the sake of fighting. I am telling you, it's my wish. So, surrendered person has no other right just to obey his master, which he has already instructed in 2.18. So, Arjuna has to just obey the orders. And when Krishna is saying work without any result, he has to obey his master, right? Work without any result. Then that's what this entire crux is. So, a person who is obeying a master, what will he do generally? He will blindly, if he is not willing to do that work. It happens sometimes, हमको ये कार्य करने को बोला है. We don't want to do that work. And what do? We do that, perform that with the big heaviness in our heart. हाँ, दिल के बियॉन्ड जाके मैं ये काम किया हूं यार, मुझे पसंद नहीं था. Okay, that is one option. Or you have some good option. You also wanted to do that work, but in a different way. But since my boss has already said to do it in this way, let me club this and do it in the best possible manner. So that my wish is also fulfilled along with boss wish. But the tangent would be only towards the duty of the boss. So either of these two things. So that is where Krishna is saying, Karmanyavadikar, that you have a right to work. So work as per my choice. Work with detachment. Today's ordering. Work with detachment. And that detachment will happen what? In the spirit of service. In the spirit of contribution. When you detach means what? That means you are contributing. समाज में कार्य होते हैं, जितने सामाजिक कार्य होते हैं, उसमें कुछ हेतु होता है क्या? वो अलग बात है. हेतु वाले भी बहुत लोग होते हैं. बट हेतु होता है क्या इन जनरल जब सामाजिक कार्य होता है तब? Basically like work for yourself and not for the company. Yeah, so that's what. Exactly. Exactly. हाँ हाँ. हेतु तो हमेशा होता है, आप कहते हैं, लेकिन हेतु तो हमेशा होता है. हाँ, नहीं एक समाज का, नहीं समाज का हेतु क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर इन अ समाज का हेतु क्या होता है? कि भाई सब लोग प्रगति करें, स्पिरिचुअलनेस आगे बढ़े, धर्म की प्रगति हो, ये हो. हाँ, तो दैट इज द वेदास थिंग. नो, दैट्स नॉट एन इश्यू. बट anything it is personal, it is for contribution for the whole society where you are also contributing. Being a illiterate person, मैं इस बात को थोड़ा, अरे प्रभु, ऐसे नहीं, कोई illiterate नहीं आपके यहाँ. मैं अपना एक्सपीरियंस, मैंने 40 इयर्स जॉब किया आप लोगों की तरह से. मेरी अप्रोच ये थी कि अपना काम निकल जाना चाहिए. मेरे साथ और भी लोग थे जो काम को प्रेम करते थे और काम में जानने का, कुछ प्रोग्रेस का, कुछ अपने दिमाग लगाने का वो काम करते थे. वो सब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस किया. मैंने 40 इयर्स सिर्फ जॉब किया. बस इसको इस तरीके से समझ ले तो ज्यादा अच्छा होगा. So, and that is what we call it as prescribed duties. That is what we call it as prescribed duties in the service of Krishna. So we get adhikar to work, and also while giving that adhikar, we also get independence to choose the work. While giving the adhikar, there is, आपको अधिकार दे दिए कार्य करना है. Boss will say, by hook or crook, you do.
I have given you, I want this result, right? So then you choose your independence to how to do that work. So you're ultimately following the boss, but you're choosing your independence. So that is where, your independence to choose that kind of work. So we do work which is in the service of Krishna. Other than Krishna's service, we don't have to do any work. And that is what Srila Prabhupada has written in this, the karma, karma and vikarma. And that is where he said, doing prescribed duties is your karma. Okay. And if you do not do what has been prescribed to you, which is, then it is vikarma. We call it as capricious, capricious duties, right? In English it is. Yeah, so capricious duties. So one which is not recommended to be done. Okay, that is capricious duties. And yeah, that's what. So we should not do anything but capricious works. Okay, without capricious thing, we should. So what is capricious work is without the sanction of authority. So without the sanction of Veda, sanction of Krishna, sanction of boss, anything that which is done without the sanction, that is. So you can work only within some perimetry, like a cow which is tied to a pole with a rope. How long the rope is, it can move only to that periphery, right? Beyond that, it cannot go. It cannot think of going beyond that fence because it can rotate only there, only to that extent. So that is where exactly when you are surrendered to Guru and when you are serving, your perimeter is already there. You cannot cross beyond that perimeter, right? So thief thinking that, चोरी करना मेरा अधिकार है, theft is my right, then is certainly wrong because it is not the prescribed duty. It is not, it is vikarma. It is a vikarma. So our work is to only do what is Krishna said, right? Do you all agree this? How many of you don't agree? No, it's okay. सोचे तो ठीक है, कृष्णा ने जो कहा वो करना है। अब दोनों तरफ अटके हुए ना, रिलीजियसली सबको समझ आता है कृष्णा ने कहा, भगवान ने कहा करना है। हाँ, वर्ल्ड में किसने कहा है, सवाल यहाँ पे आता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कृष्णा ने नहीं कहा है, इस वर्ल्ड में नहीं है। गीता महात्म्य हम सभी पढ़े हैं, जब गीता रिसाइटेशन होता है तो गीता महात्म्य भी पढ़े हम। ओके, गीता महात्म्य नंबर 7 क्या है, किसी याद होगा? नहीं तो मैं ही पढ़ता हूं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। गीता के महात्म्य में 7वां महात्म्य है। व्हाट डिड ही से? विच इज ऑल्सो नथिंग बट सर्विस टू कृष्णा। और लिखा किसने? हो पद्म पुराण में स्वयं शिव जी ने कहा है ये। और शंकराचार्य ने तो इस श्लोक को इतनी अच्छी तरह से कोट कर करके कहा है। क्या कहा है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है देवकी पुत्र का गीत। और ये कौन सा है? भगवत गीता। देवकी पुत्र स्पेसिफाई किया है कि कौन सा कृष्ण? देवकी पुत्र कृष्ण। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र कृष्ण, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देव है देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है। एक ही मंत्र है हरि नाम भगवान का। और कलयुग के लिए तो एक ही महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए 2 हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइज किया था कि यू हैव टू गेट परफेक्शन, देन दिस मंत्र इज मोर देन इनफ समटाइम्स। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। क्या कहा है? कर्म एक ही करना है, तस्य देवस्य सेवा, कंट्रीब्यूशन। कर्माप्यकम तस्य देव, कर्म एक ही करना है। और कर्म की बात चल रही है आज, राइट? भगवत गीता के महात्म्य में भी एक क्लियर कर दिया गया कि आपको एक ही कर्म करना है, देवस्य सेवा, देव के कार्यों में कंट्रीब्यूशन। परिवार भी देव ने ही आपको दिया है। परिवार के लिए कमाने जाना है, वो देव कार्य ही है। आप ये मत सोचो कि ये देव कार्य नहीं है। कई लोग बिना शादी के भी बैठे हैं, भगवान की इच्छा नहीं है।
कई लोगों के पुत्र पुत्री नहीं होते हैं, भगवान की इच्छा नहीं है, कितना ही कोशिश कर लो, भगवान की इच्छा नहीं है। हमें बस उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है अपना, ये शरीर के थ्रू जो भी कार्य हो सकता है हमें। इसलिए ये पद्म पुराण में शिव जी ने कहा है इसका महात्म्य। सो वॉट एवर गुरु साधु एंड शास्त्र सेज, दैट वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड with this body, at material level, at spiritual level. It whatever at material level and spiritual level you do, that has to be in the service to Krishna. So here Arjuna is doing accordingly. Already he is already taken Krishna as a guru. So guru is already ordered in 2.18. Apart from that, साधु, कौन है साधु वहां पे? कृपाचार्य, हाँ, द्रोणाचार्य, they are all sadhus. They have also blessed Arjuna. Okay, go and do yuddha. You can do yuddha with us only, right? They have also authorized कि युद्ध तो होगा. शास्त्र, did Shastra authorize Arjuna? Leave about this Bhagavad Gita as of now. Manusmriti, did we discuss or not? What was it? छह प्रकार के aggressors है ना? So within that, Arjuna had already faced those 6 kinds of aggressions. So Guru, Sadhu, Shastra, all are authorizing him to fight. Okay. So all these 3 are giving the adhikar to Arjuna that you have right to fight. So recognize this thing as this, recognizing this, one has to use his body and his bodily nature, not only his body and his bodily nature in the selfless service of the Lord. In the selfless service of the Lord. That mood of contribution is the motivation of our work. That mood of contribution is the motivation of our work, and not just the fruit of the work. This is where one has to understand. Fruit will come. Fruit कभी कच्चा आएगा, कभी पक्का आएगा, कभी पकेगा, कभी कच्चा ही रह जाएगा, ऐसे ही सूख जाएगा. Fruit will come. बहुत ज्यादा पका हो गया. So, so the mood of contribution is the motivation of our work and not just the fruit of the work. Technically, आप समझ रहे हो? Therefore, that contribution by me to Krishna is the motivation and not the fruit of my work. So as long as I play my role, I am contributing to the results, and the results will come on their own. So contribution is more important. So when you do this, this frees us from the pressure of the results. When you come and limit yourself to the contribution, this will freeze you from the pressure of the results, which often distracts us from doing the proper performance. And that is what Arjuna was distracted. Like in this part of the world, taking interest is haram, right? You all might have read in Quran, doesn't say, take interest. Do the bank survive then? What do they do? They change the terminology. What is the terminology? Why they call it as profit? Yeah, why they call it as profit? That is not profit, right? Profit for them is not. But they know whatever we are earning, that profit, from that we will contribute 2.5% to the Almighty as zakat. From that, we will contribute to the Almighty. That is why they take it as profit. They also do not want to disregard the Vedas, okay, as per their Vedas, okay, whatever. So that's why it is haram. So they take it in that way as a part of contribution. And in that case, it becomes, on the system as a whole. दे तो इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट बोलने के बजाय सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन बोल दिया, प्रॉफिट.
Okay, because that is where is that those kind of the sense of belongingness, the pressures, the distractions, they are not ordinarily. When you go to that spiritualistic thing, then this will not make any effect. यही मोबाइल अभी अब हम 1 घंटा मोबाइल नहीं देखेंगे चलेगा, वही अभी तुम 1 घंटा बिना मोबाइल के रह जाओ, हो सकता है. मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. 1 घंटा भी हम मोबाइल का अंगूठा हिलाए बिना हो ही नहीं सकता. लाइक डिफिकल्ट वेरी. अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा है. 18.5 18.6 खोलो. आई जस्ट वांट टू क्लियर सम थिंग्स. Being in any of the bodily level, we said 4 types, right? Any of the 4 types, these 4 things you cannot leave. What does it say? 18.5 says, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म कर्मयेत यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. उसका ट्रांसलेशन पढ़ो प्रभु. Not to be given up. They must be performed. Sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. Contribution, that is sacrifice, acts of sacrifice, charity, and penance cannot be given up at any point of time. So when you are doing the work, do it as a sacrifice, do it as a contribution, do it as a as a bodily pasyatap, as a this thing, as a penance, as a tapasya to your body, mind, and that should not be left. So you cannot say that I will not do the work. And in 6 he says, lead the translation. All these activities. It should be performed as a matter of duty or sum of part. Okay. This is my final opinion. This is my final opinion. Perform it as your duty, not as your all these types of activities. या भी आप ड्यूटी के तौर पे करोगे और विदाउट अटैचमेंट करोगे. तो अटैचमेंट कब होगा? when you think yourself as a soul and you're contributing to it. Bodily level, it keeps on coming and going, Prabhu. That is always there. And that is how we have to rectify our karmas. Whatever we are earning through this body, that is how we rectify all those karma. And that is what is the final opinion given by Krishna. That is my final opinion, he says there. So that is where we are doing all these activities only to purify ourselves, not for, to get to the spiritual level, so that, you come to that spiritual level. So whatever by bodily and bodily actions, bodily conditions I have been put into, I am working, and whatever that income comes in, that is how when I put it into this kind of karyas, when you are putting it on your family, that's also good because it's same Krishna's work. I've been time and after we have been discussing this. So this is what is, do it without any expectation. Ma phaleshu kadachana. 2.5, what did Arjuna say? Guru na hatva hi mahanubhavan shreyom bhoktum bhaiksham appiha loke guru hatvartha kamastu guru hi neva bhunjiya bhogan rudira pradigdan. That was the shloka. Arjuna, what did he say there? Yeah, you can read the translation. It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. Yeah, so he's saying that, whatever be the case, if I kill my person, that will all be tainted by blood. So desiring worldly gains, I don't want to kill my superiors. So Krishna says, you have no right to the result. He is already expecting कि भाई मैं मारूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा, मेरे ऊपर खून के छींटे लगेंगे, लांछन लगेगा. Right? So Krishna says you have no right to that result. You have adhikar only to work. You have only adhikar that you have to fight. You have no adhikar to the result of that work. Whether you win, खून के छींटे लगे या फिर पानी के छींटे लगे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है. You just have to reflect back.
Now we read about Vedas. So Vedas had given many promises, right? One of the promises in Vedas, if you want to go to Chandraloka, then you donate very nice clothes to Brahmanas, or to you. कई बार लोग कंबल बांटते हैं ना, all those. So they will go to Chandraloka. Okay. Or if you donate a cow, गाय को दान, गऊ दान बहुत बड़ा दान माना जाता है ना, गऊ और बछड़े का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो कहते हैं कि भाई, इफ यू गो एज पर वेदास एंड इफ यू डू एज पर वेदास, देन वो गाय के रोम छिद्र जितने हैं, जितने बाल है, उतने वर्षों तक तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वेद बोलते हैं। सो आपको वहां पे ले जाके भेज देंगे। दैट मीन्स दैट यू डोंट हैव टू डू गोदान, not do, as a contribution, as a service to Krishna. So that will take you to Goloka. Transcend the Swargaloka and take it to Goloka. That will transcend you from this Punarapi Jananam, Punarapi Maranam to freeing of the soul. So that's where we say Krishnarpanamastu comes in. Even if you have done it with the purpose of Vedas advice, still in the end you do it Krishnarpanamastu. है ना? Very live example, Ganpati Puja. We end up with कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। अब गणपति की पूजा में नारायण का क्या काम? गणपति भी नारायण का ही स्वरूप है, बट देन द क्वेश्चन कम्स आउट एज, until and unless you have put it to Narayan, you will always be in karma bandhana. So you have to do your actions. You have to just dovetail those actions in the service, in the contribution. On the whole system, you have to contribute to your part. Ma karma phal heturbo. So now we understand this also, and we can. So ma karma phal, do not think yourself as the cause of that fruit of that action. That means in this world, means you do. I mean, people will think, then why should I endeavor itself? On an example, that I was telling that example. Now we can take that example of that student giving an example, the test for the marks. He has studied well. Okay, he knows I'll get this marks, but will he get that marks? Now tell, that probability concept will come. Will he get that marks? हो सकता है वो फेल ही हो जाए, हो सकता है उसका पेपर ही मिसप्लेस हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स। एग्जामिनर जो करेक्ट कर रहा है उसका बीवी के साथ झगड़ा हो गया है, तो वो फेल ही हो जाए। उसके पेपर पे चाय गिर गया है, चाय पी रहा था, ऐसे ही अंदाजे से मार्क्स दे दिया। एनीथिंग कैन हैपन। हाँ, that's what I'm telling. Anything can happen. So don't think yourself as that you are इसलिए बोल रहे हैं कि don't think yourself to be the cause of that fruit. हाँ, आप कंप्यूटराइज पेपर दे रहे हैं, कंप्यूटर ने चेक कर लिया ऑटोमेटिकली, आपको 100% ओके, पास हो गए, फेल हो गए। ओके, पता कोई बग आ जाएगा उस दिन पता चल जाएगा। बग आकर ये भी प्रोबेबिलिटी हाँ, तो यही बोल रहे हैं हम भी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। ये नहीं कर रहे हमारे प्रोबेबिलिटी का नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई भी काम किया क्यों जाता है, हाँ, उसके पीछे मोटिव होती है डिजायर, राइट? वरना काम क्यों करे कोई इंसान? एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, कोई भी काम करें, चाहे हम श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हाँ, आपकी डिजायर है कि यस, कृष्ण को, मतलब डिजायर तो जरूरी है ना, विदाउट है ना, डिजायर के आप कर्म नहीं कर सकते। यस, ठीक है। अब सवाल सिर्फ यही होता है, वन ऑफ द थिंग इज routine thing you don't desire also you have to do. इट इज आल्सो योर डिजायर। मैं ब्रश क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी डिजायर है कि मैं तीन जानवर ब्रश नहीं करते हैं, जानवर ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी डिजायर नहीं है, उसकी डिजायर नहीं है। So some things that's the reason उसमें clarify किया कि desires, okay, you take it as that desire, then that's also fine. But something they have defined as routine. एनिमल चलते क्यों हैं? हाँ, डिजायर है उसकी। तो बगैर डिजायर के कर्म नहीं होता। यही श्री कृष्ण आपको आगे देखिएगा, वो बोलेंगे यही कि सारे काम इस दुनिया में डिजायर के थ्रू ही होते हैं, बगैर डिजायर का आप कर्म नहीं करते। yes, exactly, okay. आपको डिजायर को मोटिवेट करना, ट्रांसफर करना है। that is what it is. Doubt it. हम डिफरेंट डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन ठीक है। So that exactly depends. So we'll come back to that example. Everything depends on that, like examiner mood, this, that, everything will make, and that all will contribute to your result. And so what will happen? You will get demotivated or not, right?
यू विल गेट लाइक ये क्या हो गया, मैं तो लिखा था कि फेल कैसे हो गया. सो रिजल्ट फैक्टर्स कुड बी मेनी. सो समटाइम्स स्टूडेंट में गो इन डिप्रेशन, भाई मैंने तो, मेरे को तो 95 आना था और मैं तो 80 आ गया, और खाली 70 आ गया. कई लोग, many people go into depression. But now here is the thing, that if he takes this instruction that he is not responsible for the result and he has contributed his best, then at least he grows in his wisdom. Leave it about marks. He will at least grow in his wisdom. Okay. When farmer grows the land, he has a right to plow, right? But fruit coming, धान आना उसके बस में है. बारिश नहीं हुआ, बहुत तेज आंधी आ गया, बाढ़ आ गया, इट्स नॉट इन आवर, है ना. अल्टीमेटली फ्रूट मिलेगा अपने को, वी नेवर नो. इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, राइट? समटाइम्स. So one must realize that we may not be the cause for all the things. We are not the only cause. There are other causes also which factor a thing to happen. When you think our work is proportional to our income, what we earn, then that is also wrong. मैं जैसे बोल रहा था ना, कोई काम कर रहा है 8 घंटे, वो भी काम कर रहा है, वो 5,000 कमा रहा है, वही कोई 8 घंटे काम करके 50,000 कमा रहा है. तो like that proportion of work will not also give you the result. It is so many factors which will come in. Okay, but बुद्धि और आएगी तब, and all those सब हो जाएगा उसके अंदर, your vivek and all those makes a lot makes a lot of things. But you have to understand, not necessarily the amount of work and hard work would determine your reward. You have to understand that. Put any amount of hard work, that alone will not determine your reward. For example, yesterday was Dashara. So रावण का वध करने के लिए सारे राम सेना, वानर सेना को ब्रिज बनाना पड़ा ना, राम सेतु बनाना पड़ा. उस राम सेतु में कितने लोगों ने मदद की? सारे वानरों ने अनेक पत्थर लेके आए, ये करके आए. छोटी सी गिलहरी भी थी, उसने भी कंट्रीब्यूशन किया. जो मिट्टी लाके ढो सकती थी उसने भी लाके ढोई. राम ने दोनों के बीच में कोई डिफरेंस देखा? गिलहरी को ऑल्सो ही मोटिवेटेड, उनको, उसको तो तभी दे दिया रिजल्ट. छोटा सा काम था उसका तो, बाय पुटिंग 3 फिंगर्स, राइट. उसको तो छोटा सा काम तभी दे दिया रिजल्ट. और वानरों को रिजल्ट कब दिया? कृष्ण अवतार में, दामोदर के अंदर मक्खन खिलाकर वानरों को. सो डोंट थिंक दैट जो वानर वर लाफिंग, ये गिलहरी क्या काम कर रही है, हम लोग इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं और ये गिलहरी देखो इतनी सी मिट्टी मिट्टी लाके डाल रही है. शी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड. व्हाट इज, सो दैट इज व्हाट इज सेल्फलेस सर्विस. Contribute to the system. So Krishna is looking intention, not impact. Yeah, exactly. एक प्रभुपाद के एक डिसाइपल्स थे, बोले प्रभुपाद, वी आर ट्राइंग अ लॉट बट दिस बुक्स आर नॉट गेटिंग सोल्ड टुडे. Prabhupada said, don't worry, keep on trying. Krishna sees your efforts, not that how much Lakshmi you have collected and brought it to the temple. ये कभी कभी होड़ लग जाती है ना. Okay, that's also, there is a spiritual competition also, but you have to ultimately understand that we have to please Krishna and not for anything which is our purpose. तो श्रीला प्रभुपाद के साथ भी ये एग्जाम्पल हुआ था. So in this way, Krishna was hinting Arjuna that do not worry, Arjuna, you are not alone. You are not alone responsible for this war and killing of your own people. There are many other factors. Bhagavad Gita 18.14 will speak of such factors. You open 18.14. अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदाम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम. 5 things are necessary for any action to happen. कोई भी कार्य होने के लिए 5 चीजें बहुत बहुत जरूरी है. आगे चल के बताएंगे भगवान. 5 चीजें बहुत बहुत जरूरी है. और वो क्या क्या है? या रीड लाउडली. द प्लेस ऑफ एक्शन. हाँ, हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी में. स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, तथा परमात्मा. ओके, so the place of action which is this body, okay, the place of action which is being done by this body, the performer, that is the soul, okay, various senses, that is where all desires will everything come in. Okay, various senses,
एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेवर, वो चेष्टाएं, आंख देख रहा है आम लटका, अच्छा पका हुआ आम लटका हुआ है, वो जाके तोड़ने का है, चेष्टा तो करना पड़ेगा ना उसको। तो चेष्टा, दैट इज एंडेवर, एंड अल्टीमेटली द सैंक्शन ऑफ परमात्मा, दैट इज द सुपर सोल। तो विदाउट एनी ऑफ दिस नॉट कंट्रीब्यूटिंग, द वर्क विल नॉट हैपन। एक भी इसमें से कंट्रीब्यूट नहीं किया, दैट वर्क विल नॉट हैपन। So when the contribution in the whole system, it is your duty that as a soul you have to perform this work. As a body, you have to do this work. Mate sangosva karmani. Do not be attached to of not doing work. So do not run away with the work also. You have to do the work. So in order to get all this, like it's Arjuna has come to fight, and if he thinks that he is killing his relatives, he will go in trouble. And that is what he is into. So that's why in order to get out all the psychological complexities, he has to recognize that he is the best Dhanurdhar. Okay? He is the Dhanurdhar, and he has a right to fight as a Dhanurdhar. Okay? And he is not motivated with any result, that is win or lose. He is not motivated with any result, that is win or lose, but by acting according to the nature of the spirit of service with detachment, at least he'll grow in wisdom. Since he has surrendered to the Guru, Guru has ordered you have to fight and give him all the options that you are alone not responsible. So at least then he will grow in wisdom. If not, he'll leave about winning the war or losing the war. So the student sometimes, same thing. If he takes too much bothered about the result, then he may not be able to perform well also. Nowadays, today's students keep on, we wrote मॉडल पेपर नंबर 2018 का मॉडल पेपर, 2024 का मॉडल पेपर, टू दिस टीचर्स ऑल्सो एग्जैक्टली सेज ये मॉडल पेपर पढ़ लो, वो मॉडल पेपर पढ़ लो, दे ऑल्सो गिव 3-4 मॉडल पेपर। आई डोंट नो, ज्यादा में भी यही होता होगा, आई एम श्योर, राइट? हाँ, यही होता है ना, मॉडल पेपर ही होता है। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस पढ़ते रहो, क्वेश्चंस ले लिया, क्वेश्चन का आंसर बना लिया, बनाते रहो बनाते रहो। नो, दैट इज नॉट द वे वन हैज टू स्टडी। And I keep telling my daughter also, I never studied that way. I never studied model paper. We never had a chance to buy also. For us, it was like costly thing. We never thought about it also. Neither our teachers used to say, model paper kharido. We used to only read our textbooks. So, you have to just read your textbooks, understand the thing, and whatever question has been asked, based at least right on your understanding, then at least you will grow in wisdom that I have understood this very well. I know this is the answer for this, and I have written that. You will grow in wisdom. Okay, marks कुछ भी आया, marks कुछ भी आया, at least you will grow. So at least you will not be haunted. What question paper will come? What will come? What will come? No, because I have read. My duty, अधिकार है मेरा पढ़ना एज ए विद्यार्थी, और पढ़ाई करने के बाद में परीक्षा प्रश्न आ रहा है, उसका उत्तर देना है। उसमें मुझे इतना टेंशन लेने की क्या बात है? So this way, instead of focusing on, instead of focusing on this model paper, that model paper, he just focuses on gaining that knowledge. At least he'll be okay. So according to your Swadharma, that is Kshatriya here, he will always be active. So let me do my duty. Arjuna should think in that way, that let me do my duty and fight instead of being inactive. अकर्मणी तो कर नहीं सकता मैं। यहाँ कर्म का मतलब है काम नहीं करना। अकर्म का दूसरा मीनिंग है काम मेरे लिए नहीं करना है, दूसरे के लिए करना है। तो कृष्णा ने ऑलरेडी 2.18 में ऑर्डर दिया था, चल उठ के युद्ध कर। तो जब वो कृष्णा के लिए युद्ध करेगा, तो ये जो युद्ध सारा कर्म है उसके लिए अकर्म में परिवर्तित हो जाएगा। कर्म का मतलब होता है कि अपने लिए नहीं करना। कर्म ना करना नहीं। हाँ, कर्म ना करना नहीं, अपने लिए ना करना, अपने स्वार्थी इंद्रियों के लिए नहीं करना, उसको भी अकर्म ही बोला जाता है। ओके, so despite 4 counting negative things in this verse, all get reconciled by understanding the complete dynamics of the relationship between the body and the soul, and the relationship between the human endeavor and the higher order of things that could bring results. हरे कृष्णा। आप बोलो क्या चीज रिकंसाइल नहीं हुआ? अभी भी कुछ है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। I
आई डोंट नो पूछना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, पूछना चाहिए प्रभु, क्योंकि ये जिज्ञासा है ये तो। लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था कि जो पहले ऋषि मुनि से ऐसे ही शराब दे देते थे, हाँ। तो ये हो गया वो हो गया, तो इसको अगर हम एक्शन से जोड़े तो मतलब कितने ऋषि मुनि थे, वो भी मतलब वो रिजल्ट आया उनका, वो भी मतलब उनको मोटिवेट हो गए, इम्पैक्ट हो गए रिजल्ट से उन्होंने, हाँ। तो वो शराब दे देते। हाँ। तो आजकल के दौर में हम हमारे लिए क्या करेंगे, हम क्या भगवत गीता इसीलिए है ना प्रभु, यही तो ज्ञान देती है आपको। प्रभु ने भी वही बोला था, अभी ये सोचो ना, उनके लिए तो अच्छा ही है, जैसे हम दामोदर अब करेंगे तो यही है कि भगवान को तो ये सॉरी नारद मुनि को नल कुमार और कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देना फायदा हुआ। अगले जन्म में कम से कम वो फ्री तो हो गए, 20,000 दिव्य वर्षों में फ्री तो हुए। और हम तो कितने वर्षों से ये जन्म जन्म के चक्कर काटते आ रहे हैं, कितने बार मनुष्य बने पता नहीं, कितने बार सुअर बने पता नहीं, कितने बार चींटी कांटे बने पता नहीं। पहले एडिशन में पढ़ा था कि अथॉरिटी, हाँ ये भी है, अथॉरिटी, अथॉरिटी मैट्रिक्स, इसके ऊपर भी बोल सकते हैं ना। अथॉरिटी मैट्रिक्स इज एवरीबडी फॉलोड इन कंपनीज, राइट? व्हाट इज एज पर अथॉरिटी मैट्रिक्स? दैट अथॉरिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. So if you are going beyond authority matrix, it will become against duties. You may be punished also sometimes. Auditor आपको निकाल देगा उस कंपनी में, भाई this is a duty which has been prescribed without authorization. वो खींच देगा उसमें आपको, उसके अंदर आपको देने के लेने पड़ जाते हैं, है ना? So authority matrix. So authority is saying you work. Don't bother about the results because you alone are not responsible for the results. Since you are not thinking of the result, that doesn't mean that you don't work. अगर अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ वर्क का, तो फिर सफरिंग क्यों हो रही है मेरे को? हाँ, कहा जाता है फिर मैं सफर क्यों करूँ? किसका? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माय वर्क, हाँ, देन व्हाई शुड आई सफर? why should you आई एम सफरिंग। suffer? हाँ, ओके ओके, जब आप कह रहे हैं, हाँ, कंक्लूजन आज का ये है कि हमें सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है विदाउट एनी नहीं- फल की इच्छा नहीं रखना है. व्हाई शुड आई सफर? What kind of suffering you are getting? और सफरिंग तो आप कहते हैं दुनिया दुख चाल है। हाँ, तो that is where I am telling, get out to the spiritual level. No, then it is not. कोई भी सफरिंग है ना भाई, हाँ, हाँ. बीमार हो रहा हूँ। हाँ, तो बीमार, ये चीजें तो अवॉइड ही नहीं कर सकते आप ना, इसीलिए शारीरिक लेवल की चीजें हैं प्रभु, यही तो बातें हैं ना फिर, शारीरिक और स्पिरिचुअल. आप शारीरिक लेवल पे स्पिरिचुअल सोलेस ढूंढना चाह रहे हो, शारीरिक लेवल पर. यही तो पॉइंट है, हमें सफर करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो सारे सफरिंग का एक ही इलाज है प्रभु, सब कुछ कृष्णा के ऊपर छोड़ दो. सफरिंग भी लिखा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी आएगी. आध्यात्मिक लेवल पे सोच लें या फिर व्यवहारिक लेवल पे सोच लें प्रभु, व्यावहारिक लेवल पे आप परमात्मिक लेवल, व्यवहारिक लेवल को आप जब परमात्मा के लेवल पे मिलाओगे तभी आप सोचोगे कि भाई हो सकता है ये मैंने कुछ कर्म किए जिसको मुझे सफर करना है. जो आपका पूर्व कर्म है वो थोड़ी जल गया है, वो तो करना ही आपको. मतलब मुझे फल मिल रहे हैं, हाँ, मिल रहे हैं ना. तो हुआ मैं कर्म कर यस. मैं रिस्पॉन्सिबल, अभी आप थोड़ी देर हम यही डिस्कशन करें कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा काम सिर्फ कर्म करना, कर्म करना है. नहीं नहीं, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है बोल रहा हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, चिंता ही तो कर रहा हूँ, फल की चिंता नहीं करूंगा, अगला कर्म मुझे वापस तो फिर वापस अटैच रहोगे प्रभु. दैट्स होल थिंग. वापस अगला जन्म मिलेगा आपको, फल पूरा नहीं हुआ तो आपका फल पूरा नहीं हुआ तो फिर जन्म मिलेगा आपको. आराम से बैठे श्रीला प्रभुपाद की जय. हर चैप्टर आएगा कर्म योग. हाँ.